Hello everyone, I again welcome you all on my YouTube channel Success Pharma. Today in this video we will discuss the general pharmacology part 2. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में डिस्कस किया था फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक along with the several branches of pharmacology as well as the classification of drugs on the basis of sources. तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे nomenclature of drug, drug actions plus targets of drug as well as the ligand receptor interactions along with the theories as well as the estimation of drug concentrations. So let's start the video. First one is the nomenclature of drug. The term drug nomenclature implies that there are several names that can be used to identify a drug. तो किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है. जैसे कि आपका नेम एंड निकनेम है, वैसे ही हर एक ड्रग का अपना एक नेम होता है. सो ड्रग हैव 3 डिफरेंट नेम्स. फर्स्ट वन इज द केमिकल नेम, IUPAC नेम, that is based on the chemical compositions. Second one is the non-proprietary, generic, approved, official or pharmacopoeial names. Means the drug name mentioned in the pharmacopoeia is known as a pharmacopoeial, generic or approved name. Next one is the proprietary name, trade name or brand names. Means proprietary means किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी प्लस ट्रेड और ब्रांड नेम. सो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं एस्प्रिन. एस्प्रिन का केमिकल नेम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है. मीन्स IUPAC और केमिकल नेम इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. सेकेंड वन इज अ नॉन प्रोप्राइटरी. इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ समवन. सो जेनेरिकली और फार्माकोपियल नेम ऑफ एस्प्रिन इज एस्प्रिन. बट it is in case of brand name, it is marketed as a Disprin or some other brands. So Disprin is the tablet which is composed of aspirin. Aspirin is a non-proprietary name of that drug and that drug is chemically composed of acetyl salicylic acid. I hope आपको समझ में आ गया होगा. Now drug actions. So when drug is enter into the body, it search the target. After searching the target, it modify the functions by binding to the target and shows their pharmacological actions. तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, जो ड्रग किसी भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में इनकॉर्पोरेटेड है, इट मे बी टैबलेट, कैप्सूल्स, लिक्विड डोजेस फॉर्म, इंजेक्शंस. तो जब भी ड्रग हमारी बॉडी में एंटर करती है तो फर्स्टली ये टारगेट सर्च करती है. व्हेन इट सर्च द टारगेट, these target are of 4 types. When it searches the target, then it bind to that target and shows their pharmacological actions. Now this is the most important slide. So let's see the drug targets. Drug targets are of 4 types. These drug targets are present in our body. First one is the receptor, second one is the enzyme, third one is the ion channel and fourth one is the transporter. तो जब भी कोई ड्रग किसी भी टारगेट से बाइंड करेगी, इट आइदर एक्टिवेटेड द फंक्शन ऑफ दैट टारगेट और इट्स डीएक्टिवेट द फंक्शन ऑफ दैट टारगेट. सो फर्स्ट व्हेन ड्रग इज बाइंड टू द रिसेप्टर, it generally activate the receptor or deactivated the receptor. It depend on the nature of drug. Second one is the enzyme. When drug is bind to the enzyme, it stimulate the function of enzyme or it inhibit the function of enzyme. Stimulate means increase करना और inhibit means reduce करना. Next, ion channel. When drug is bind to the ion channel is a channel of ions. It either open the ion channel or it close the ion channel. Next one is the transporter. When the drug is bind to the transporter, it directly block the transporter or it modulate the transporter. So it is depend on the nature of that drug. First target is receptor. Receptor are the protein molecules that are present in our body. Drug molecule interact with the specific molecule in the biological system. Biological system means body that play a regulatory role. This molecule is called receptor. Simply ड्रग किसी भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आती है, दैट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी एंड प्ले अ रेगुलेटरी रोल्स. सो दिस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रिसेप्टर. नाउ रिसेप्टर हैव फॉलोइंग फंक्शन. फर्स्ट इज द रिकॉग्निशन, सेकेंड वन इज द ट्रांसडक्शन. इसे ऐसे समझ सकते हैं,
जब आप किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो आप उसे आइडेंटिफाई करते हैं बाय द नेम ऑफ दैट पर्सन। नेक्स्ट फिर आगे उसके आगे बात करते हैं। सो फर्स्ट जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो रिकॉग्निशन स्टेप कहलाता है। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसडक्शन। सो रिकॉग्निशन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट ड्रग and transduction is the conformational changes in the respective receptor structure. Now, ligand receptor interactions. Ligand means drug, receptor means specific molecule that are present in the biological system. So, when the drug come in contact with the receptor, leads to the pharmacological response of that drug. So here, ligand come in contact with the receptor, leads to the ligand receptor binding, then signal transduction steps via secondary messengers. Third one is the cellular response in the cytosol or changes in the gene expression in the nucleus, and finally leads to the pharmacological response of that drug. Now, theories related to the drug receptor interactions. First theory is the receptor occupation theory. Second one is the two-state receptor model theory. So first theory, occupation theory, is given by Clark in 1937. According to this theory, the effect of drug is directly proportional to the portion of receptor occupied by the ligand. इस थ्योरी में यह बताया गया था कि जो ligand मीन्स ड्रग जितना पोर्शन रिसेप्टर का कवर करेगी उतना रिस्पॉन्स आएगा. Means, according to this theory, 100% effect of that drug is possible, but practically it is not possible. So here, D plus R, D means drug, R means receptor, leads to the drug receptor complex, and finally E for the effect of that drug. Now, two-state receptor model theory. According to this theory, receptor R exist in two interchangeable state, RA active, RI inactive, which are in equilibrium. Generally RA and RI equilibrium में होता है. This equilibrium is shifted between the state responsible for the drug response. When drug molecule is bind to the particular RA or RI, the equilibrium is shifted, or where the equilibrium is shifted leads to the drug response. According to two-state receptor model, there are 5 conditions. First condition is resting equilibrium, means RA and RI are in equilibrium. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंडीशंस नॉर्मल बॉडी कंडीशंस की बात है जहां पर रेस्टिंग इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कंडीशंस is for the 4 type of drugs. These are the type of drug that is A, B, C, D. A means agonist, B for the antagonist, C for the partial agonist, and D for the inverse agonist. So agonist when bind to the RA means RA activated state leads to the pharmacological response and equilibrium is shifted toward the RA, and this conditions or this drug is known as agonist. Third one is the antagonist. Antagonist bind to the RA and RI leads to no response, means normalize the body conditions. Fourth one is the partial agonist. Partial means submaximal level. Agonist always activated the receptor, so it act on the RA side and shifted the equilibrium toward the RA and leads to the partial response of that drug. Next, RA and RI. Here the equilibrium shifted toward the RI side, means R means receptor inactivated state. This is the inverse agonist. Inverse agonist always work in the opposite directions. On the basis of drug receptor interactions, there are 4 types of drug: agonist, partial agonist, antagonist and inverse agonist. तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, एगोनिस्ट वह ड्रग्स होती है जो रिसेप्टर को पर बाइंड करके हमेशा रिसेप्टर को एक्टिवेटेड करेंगी अप टू मैक्सिमम लेवल. पार्शियल एगोनिस्ट वह ड्रग होती है जो रिसेप्टर पर बाइंड करके उसे एक्टिवेट कराएंगी बट अप टू सब मैक्सिमम लेवल. एंटागोनिस्ट वह ड्रग होती है जो एगोनिस्ट के एक्शन को प्रिवेंट करेंगी और नलीफाई करेंगी इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट, मींस नॉर्मलाइज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर. Fourth one is the inverse agonist. Inverse agonist always work in opposite direction and it always deactivated the receptor. So first agonist means agent that bind to the receptor
and activated the receptor to produce a biological response similar to physiological signaling molecule. Similar to physiological signaling molecule means जो हमारी बॉडी में सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म्स चल रही हैं उसके सिमिलर जो ड्रग वर्क करेगी उसे हम एगोनिस्ट बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल मिथाकोलिन. मिथाकोलिन इज द एगोनिस्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन. एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में सीक्रेट होता है. व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइलकोलिन in our body, so methacholine is given externally to the body and it work as a acetylcholine agonist. Next is the partial agonist, an agent that which activated a receptor and produce some maximal effect. For example, drug nalorphine work for the opioid receptor. Nalorphine always act as a partial agonist on the opioid receptor. Third one is the antagonist. Antagonists are the agent which prevent the action of agonist on the receptor. तो antagonist हमेशा receptor को nullify करेगी the effect of agonist. For example, propranolol. Propranolol बहुत important example है beta adrenergic receptor का. It is used as a beta blocker and used in case of the several heart diseases and used as a adrenergic blocker. Fourth one is the inverse agonist. It is an agent which activated a receptor to produce an effect in the opposite direction to that of agonist. मतलब ये agonist के opposite direction में work करेंगे. For example, beta carbolene as an inverse agonist to the GABA A receptor. GABA A receptor पर beta carbolene work करता है और ये हमेशा inverse agonist की तरह act करेगा. Now, drug interact with the receptor have two activities. First one is the affinity, second is the intrinsic activity. Affinity means binding. कोई भी ड्रग जब किसी रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो वो उसकी अफिनिटी होगी और जब ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करके कुछ फंक्शनल चेंजेस एंड शोज द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट इज द इफिकेसी ऑफ दैट ड्रग. So first affinity means ability to bind with the receptor is refers to its affinity. Second intrinsic activity means the capacity to induce a functional change in the receptor are called as intrinsic activity or efficacy of that drug. So there are four type of drug: agonist, partial agonist, antagonist and inverse agonist. So affinity of these four types of drug is 1 because all four have the capability to bind with the receptor, but intrinsic activity of these four drug is different. So for the agonist, intrinsic activity is 1 because it bind to the receptor and shows the functional change up to maximum level. Second one is the partial agonist. Partial agonist means bind to the receptor and shows up to some maximum level, means 0 to 1. It may be 0.4, 0.5, 0.6. And for the antagonist it is 0. Intrinsic activity 0 means antagonist always work to oppose the action of agonist or nullify the effect of agonist. Fourth one is the inverse agonist, means the intrinsic activity of inverse agonist is always -1, means it work in the opposite directions. Now estimation of drug concentrations. So drug concentration is determined by using two methods. यहाँ पर आपको दो मेथड्स याद रखनी है. फर्स्ट इज द बियर-लैम्बर्ट्स लॉ एंड सेकंड इज हिल-लिंगमेयर इक्वेशंस. तो बियर-लैम्बर्ट्स लॉ आपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सुना होगा. बियर-लैम्बर्ट्स लॉ का यूज किसी भी ड्रग की कंसेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है. सो इट इज यूज टू डिटरमाइन द कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग बाय मेजरिंग द एब्जॉर्बेंस एट वेरियस वेवलेंथ. By measure the absorbance at particular wavelength, and it also shows the relationship between the absorbance and concentrations. In case of Beer-Lambert's law, there is a linear relationship between the concentration and absorbance. Second one is the Hill-Lingmeyer equation. It reflects the binding of ligand to the molecule as a function of ligand concentration. Ligand concentration means drug concentration is determined as a function of binding of ligand to macromolecules. It is also used to quantify the functional parameter of drug or ligand. Thank you.
ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फार्माकोलॉजी विदाउट जनरल फार्माकोलॉजी के नहीं समझी जा सकती है। तो आपको पहले जनरल फार्माकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझना होगा, तब आप आगे फार्माकोलॉजी की सारी ड्रग्स प्लस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ पाएंगे। एट लास्ट डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मौतें गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू सो मच।